Hello, everyone. Welcome to another session of an academy. First, let me check whether I'm audible or not, whether the video is visible or not. Just give me a moment to check everything, and then we can move on with another session. Talks about backup. Okay. Yes. First, let me check. I'm perfectly audible. Perfectly audible. Yes. Okay. Very warm good evening to all of you. Thank you so much for joining this and talking about very backup plans that every CS actually what happens time to it as a course, and that that makes sort of as if you're behind and anxiety तो अभी तक सीए और भी नहीं किया good job personal life and so many other anxiety that by just one course see just because the duration is long, just because exit is very difficult out of this course. Every CA student they must they must have a backup plan. Okay, why backup plan is necessary is that will give you a mental stability every time you are preparing. Okay. If you have a strong backup, you'll always feel, chalo, I have already so many in my hand. Even if CA is not being completed, तो हमारे पास बहुत कुछ है. There is nothing to stress about. First of all, I'll start with some basic, courses आप क्या साथ में कर सकते हैं. And उसके अलावा और क्या career option आप एज अ सी आधी सी पढ़ाई करके ऑप्ट कर सकते हैं. So I believe when if you feel like when if you feel as if you just want to do मतलब एकदम आप क्लियर है कि मुझे सिर्फ सीए करना है इसके अलावा और कुछ नहीं करना है तो यू शुड हैव अ वेरी आपको फिर उस बहुत अच्छे से लगना पड़ेगा. तो लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको ये पहले से क्लियर होता है कि मुझे करना है एंड दे नो दैट दे विल ऑलवेज बीइंग एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और वो पढ़ाई करते निकल जाते हैं या तो वो रैंक निकालते हैं या फिर वो विदाउट इवन कॉलेज ग्रेजुएशन भी किए बिना दे क्लियर इट इन अ गो. तो एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट और मैं बीइंग अ फाइनल स्टूडेंट मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से जो मैंने गेन किया जो मुझे लगता है कि होना चाहिए राइट वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा बहुत बहुत अच्छे रहे हो एक्सीलेंट बैकग्राउंड है आपका एकेडमिक का तो आप क्या कर सकते हो. यू नो दैट यू हैव ऑलवेज बीन क्लास टॉपर आपके सीबीएसई में भी रैंक लाए तो आपके लिए सीए वोंट बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है तब आप शायद बैकअप प्लान नहीं भी लेते हो इट वर्क्स. But if you have been a average student या below average या mediocre student बिल्कुल ऐसे level पे हो then I vouch on the words that you should have a backup plan. You should definitely have a backup plan. Okay. तो मेरा जो केस था मैंने भी जो सीए किया I always had backups. Okay. So as a CA student after 12th इफ यू आर वेरी श्योर कि आपको बस सीए करना है और एक अटेम्प्ट में निकल सकता है यू गेव योर फाउंडेशन वो एक अटेम्प्ट में निकल गया यू गेव योर इंटरमीडिएट वो एक अटेम्प्ट में लग गया नो वरीज वहां पे आपको कोई टेंशन की बात नहीं है आप फाइनल भी दो और एक अटेम्प्ट निकालो एंड यू कैन बिकम सीए इन 20-21 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है 20-21 ईयर्स में आराम से बन आप 12-18 थर्ड में आप 12 पास करते हो एंड फाउंडेशन इंटरमीडिएट यू कैन जस्ट कंप्लीट इन अबाउट 1.5 years. then about 21 ईयर्स तक आराम से सीख. ठीक है अब जो लोग वेरी दे नॉट वेरी श्योर यू शुड गो विथ सम बैकअप. यू कैन गो विथ कॉलेजेस. तो मैंने अपने लिए बैकअप रखा था एक रेगुलर कॉलेज. तो आई गॉट इनटू डीयू जेएमसी साउथ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज.
So I first got into a graduating college. I completed my graduation and I started my CA in the second year of my graduation. मतलब मैंने ऐसे प्लान करा कि मैंने सेकेंड ईयर में सीए स्टार्ट किया सो दैट फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कॉलेज पे ध्यान। सेकेंड ईयर में मैंने सीए स्टार्ट किया तब मेरा तब मैंने कॉलेज में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, सिर्फ उतने बेसिस में मेरा आराम से फाउंडेशन क्लियर हो गया सेकेंड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर खत्म होते होते मैंने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स खत्म कर लिए थे एंड द मोमेंट माय कॉलेज एंडेड, माय रेगुलर कॉलेज एंडेड, आई स्टार्टेड विद है, कहीं भी गैप आने की जरूरत नहीं पड़ी एक्सेप्ट द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज। तो एक साल आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा व्हेन यू आर डूइंग विद द रेगुलर कॉलेज। Okay, but before we move on with further more discussion on this topic, I have a very important piece of info. Chapter wise free test series start हो चुका है already। अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे अकाउंट्स का 17 मार्च को हो चुका है, लॉ का 19 मार्च को है, कॉस्टिंग का 21 मार्च को है, टैक्सेशन का 23rd। So make sure you attend all these test series because these are very free test series। और इसमें देयर assured voucher जो 1000 रुपीज आपको अमेजोन कहीं मिले। फिर सीए फाउंडेशन वालों के लिए although this is for CA intermediate but anyone from CA foundation who is watching this or any friends of yours who has completed 12th, सीए फाउंडेशन वालों के लिए 2 अप्रैल को होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज द मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर सीए एस्पिरेंट। आपको फर्स्ट रैंक लाने पे 90% की स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस लैपटॉप मिलेगा, सेकंड रैंक लाने पे टैबलेट और 60% की स्कॉलरशिप मिलेगी, थर्ड रैंक लाने पे मोबाइल फोन और जो है आपको परसेंट 90% की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फर्स्ट से थर्ड रैंक को 90 स्कॉलरशिप मिलेगी। रेस्ट ऑल यू कैन सी 4 से 10 वालों को मिलेगी 60%, 4 से 10 वालों को मिलेगी 60% की एंड 11 to 50 40% की एंड 50% so on। So if you are buying any of the unacademy subscription, is IHK मेरा जो नाम है वही मेरा कोड है, छोटा सा नाम छोटा सा कोड। So I hope you don't go to and let's talk about uh, all the backups that you number one is pursuing higher education। If you are, this video is very important, you should watch this, you should watch it till the end। मतलब मैंने ये सारी डिफिकल्टी फेस करी है एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टू सजेस्ट कि आपको क्या करना है। तो इफ यू आर ये कोर्स इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, आपने जैसे ही दिया आपको फाउंडेशन अटेम्प्ट लग गया ज्यादा, इंटरमीडिएट में एक अटेम्प्ट लग गया ज्यादा, ठीक है, डोंट कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद ये मतलब बैक टू बैक, उसमें आप एक बैकअप जरूर ले। अगर आपका सब कुछ एक एक लेवल में निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते जाओ। फिर आपको कहीं पे भी अटेम्प्ट लग रहा है कि आपको 23 साल से ज्यादा सीए साल से ज्यादा लग रहा है, आप इतने के होते जा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप 21 के हो, आप ये इंटरमीडिएट कर चुके हो, इसके आगे नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर go for some backup। You can complete your graduation from any of the या तो रेगुलर कॉलेज कर लो या फिर आप वो कॉलेज कर लो नॉर्मल वाले कॉरेस्पॉन्डेंट वाले, ठीक है। यू कैन गो फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन जैसे कि एमकॉम कर सकते हो, यू कैन गो फॉर एमबीए बट सीधी रैंकिंग ऑफ द कॉलेज आ, एमबीए भी बिग बिजनेस स्कूल से करना ज्यादा फायदे का है, लेकिन you can go for some good rating वाले colleges and you can pursue higher MBA courses डिग्री। तो साथ में साथ आपके पास इतना बैकअप होगा कि even if you have to give the intermediate degree today or not pursue CA final or delay your CA final attempt, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, you get a job with the combination of CA inter plus MBA, ये inter plus MBA। So currently I'm working with IILM University as the assistant manager finance। ठीक है, so I'm working as an assistant manager finance and जो and also आपको पता होगा कि मेरा CA complete नहीं हुआ, so why I got such a high position at a university, ठीक है कि university position मिला
इज बिकॉज विथ माई इंटरमीडिएट जो भी कोर्स था, इंटरमीडिएट के साथ साथ मेरा एमकॉम भी completed था. So when I had to like produce my, तो दिख रहा था कि she has already completed PG, right? And along with that उसने इंटरमीडिएट भी कर रखा है. So that is how pursuing higher education will help you a lot. हाँ, आप ये कहते हो कि सीए बनना ही एक पीजी की डिग्री है, तो फिर हम एमबीए क्यों करें? पर देखो, अगर आप स्टेबल हो, अगर मैं इस टाइम पे स्टेबल हूँ, मुझे जॉब मिल गई, मैं हो सकता है अभी स्टेबल हूँ, तो मैं सेटल भी हो सकती हूँ आराम से. आई कैन गेट सेटल्ड एंड देन मुझे अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आई कैन टेक पॉजेस एंड कंटिन्यू माय सीए डिग्री लेटर ऑन एज वेल. मैं कंप्लीटली ये नहीं कह रही कि आप सीए छोड़ दो, बैकअप लेने का ये मतलब नहीं है छोड़ देना, ठीक है? फिर मतलब हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि आप सीए, एग्जाम्पल अभी आई कैन गेट सेटल्ड बिकॉज आई एम बीइंग, मतलब जो भी है एट विद द सेम कॉम्बिनेशन, अच्छी पेमेंट मिल जाती है, अच्छे सैलरी मिल जाते हैं. एंड नॉट ओनली मी, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स आल्सो हु हैव लेफ्ट इन बिटवीन, इंटरमीडिएट करके छोड़ा है या जो भी है, दे आर इनटू बिग कंपनीज एंड दे आर अर्निंग अ लॉट just because they have either completed their PhD degree with some not MBA, कुछ भी इस तरीके का. Okay. I won't talk about degrees such as CS, CMA या CFA because कहीं ना कहीं ये सब कुछ उतना ही डिफिकल्ट है जितना सीए. बैकअप का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ जो ये नहीं मिला तो ये तो आराम से मिला. अगर सीए नहीं मिला तो क्या सीएस भी इतनी आसान नहीं, ये में भी इतनी आसान नहीं. तो आई वोंट कॉल इट एज अ बैकअप डिग्री, पर आप साथ में कर सकते हो इफ यू वांट टू. ये बैकअप नहीं कहलाएगा क्योंकि बैकअप कुछ ऐसा होना चाहिए व्हिच माइट हैव द श्योरिटी कि ये तो मिल, ठीक है. pursue your higher education, complete your MBA, MCom, and so many others. Next, switching to another career in accounting. You can switch to another career. So for example, अभी चल रहा है investment banking का career बहुत top में. So even if you want to see, drop your CA, course, or if you feel like it later on ऐसा achievable नहीं हो रहा है, you leave the degree and go for pursuing other careers like financial analyst, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है. आप दूसरा चीज यूज इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो. ऑल दीज थिंग्स इन्वेस्टमेंट बैंकर में गो फॉर सम गुड कोर्स एंड डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड जॉब बिकॉज आपने इधर फाउंडेशन. एनी डाउट टिल हियर? आई एम सो लाइक डन विथ माय थ्रोट. आई एम सो डन विथ माय थ्रोट. नॉट फुल audible. Checking with, yes, can switch to another career in accounting. Maybe you can go for investment banking. Maybe you can go for financial analyst. Any such other degree, data analyst. So many other courses and short-term courses. मतलब 2-3 महीने courses that you can get very high-paid jobs, right? अब आप कहोगे कि आप तब से जॉब की बात कर रहे हो कि जॉब कर लो, जॉब कर लो. You can even go with another field, start your own with the knowledge that you have at intermediate level. I think that is enough to start your own, have enough to manage your own finances, investments, taxation. आप आज के आज अपनी पसंद की जगह पे बिजनेस कर सकते हो. यू कैन गो फॉर एनीथिंग यू लाइक. आपको जो भी पसंद हो बिजनेस, कोई बैकअप, तो आपने अगर अपने मन से सोचा है कि ये नहीं तो ये कर सकते हैं, तो बैकअप की बात करें तो बिजनेस विल बी वन वेरी गुड ऑप्शन. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु हैव बीन एंड जब उनसे नहीं हुआ, दे लेफ्ट आउट एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस और दे आर डूइंग ग्रेट, तो बहुत अच्छा. एंड आई एम स्टिल वंडरिंग कि हाँ ठीक है कि मैं सीए बन भी जाऊं, तो आई डोंट थिंक उतना उन्होंने अब तक अचीव कर लिया उतना मुझे अचीव करने में बहुत टाइम है. यस, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड yeah. Also, there's one more field that has come as an option for C. It's called content.
I've seen many intermediate foundation students have started doing content. You can do it on YouTube, you can do it on LinkedIn. And trust me, content creation से सिर्फ ये नहीं कि आप YouTube पे subscribers पा रहे हो. You can grow a lot. You have a great opportunity as a content. Yeah. I've seen my juniors जो अभी intermediate में हैं and they've got so many subscribers. The content creation has also come up as an emerging backup option for CA, right? You can start a YouTube channel, you can start, doing vlogs of whatever events you are going into for CA, course. आप OC में जा रहे हो, आप ITT में जा रहे हो, you can vlog every moment. You're going out for an audit, you can vlog out an moment with, of course, the permission that is required, and you can upload it on YouTube. You can talk about the expertise that you have in a particular subject on LinkedIn. So students of like intermediate, I've seen them having 40,000, 50,000 followers on LinkedIn as well. Okay, so content creation has also been a good backup plan. अब आप कहोगे इससे पैसे कहाँ से आएंगे, इससे यू नो जिंदगी कैसे चलेगी? So there's very much scope in content creation. Because once you have a lot of followers, you get to work with brands. Okay. For example, you can see my case as well. I got followers on my own pages and LinkedIn वगैरह. And because of that, I got to work with brands like an academy, right? So content creation has also emerged as a very good backup plan. If you're working with brands, of course, you'll be getting paid for all that, right? So content creation is very good and emerging backup for a C student, right? You start vlogging from today. आप आज के आज start करो. Don't think कि ये खत्म कर लूंगा तब start करूंगा. Trust me, आज के आज start कर दो and then you will, pat your shoulders later on कि यार thank God मैंने उस दिन start कर लिया. I've got so many things to upload already, right? So you can start a business, you can go into content creation and emerge, scope which is has an emerge a scope for all C students, right? Okay. With this, you can also explore other industries. Okay, so maybe your chartered accountants are already in demand, including healthcare, education, and non-profit sectors. So if you know कि chartered accountants का यहाँ पे already demand है, तो maybe with all that, चाहे आपके पास qualification ना हो, but आपके अंदर वो skills है, तो आप उन industries को explore कर सकते हो, right? अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, आपने इंडस्ट्री चूज कर लिया. Okay, so even if you do not clear your CA, you can go into, for example, I've seen teachers who might not have completed their chartered accountancy, but they're good in teaching students, right? So I've seen them teaching foundation students, and they're doing well. Because जब आप पढ़ाने की बात आते हैं, तब आपको सिर्फ एक्सपर्टीज किसी एक सब्जेक्ट में चाहिए होती है. Whereas to become a chartered accountant, you need at least good expertise in, अगर 8 सब्जेक्ट्स है तो 8 में 6 में आपको एक्सपर्टीज चाहिए ही होगी to clear the exam. हो सकता है किसी का लॉ बहुत अच्छा हो और किसी का टैक्स बहुत बेकार हो, तो ही और शी कुड बिकम अ गुड टीचर ऑफ लॉ बट नॉट ऑफ टैक्स. तो अगर आप ये कहते हो कि टीचिंग में जाने के लिए, एजुकेशन लाइन में जाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट होना जरूरी है, so I'll say you're wrong, you have the wrong perception about it. ये Similarly, you can explore out other industries. Now already chartered accountants का demand होता है, and then you can inculcate those other skills in yourself, and you can just apply and try those industries. Also, you can, if you have passion about some particular things. So one of my friends, she was doing chartered accounting, then she left out, I believe, because I don't know about अभी आगे उसका future का plan क्या है, and she started uh, the her passion as a food blogger, and now she has more than about 50 60,000 followers on Instagram. So if you have passion, just explore out those opportunities. For example, I do also have a backup plan. I love dancing and I'm a trained Kathak dancer. Okay.
तो आई हैव अ ब्लैक बैकअप प्लान कि अगर if touch wood does if I'm not able to clear chartered accountancy, I am surely going into the dancing. I'm going into the kathak and professional teaching dancing. So you can explore out your passion. And बहुत बार ऐसा होता है कि initially you start chartered accountancy, आपके फ्रेंड्स भी कर रहे थे, लेटर ऑन यू रियलाइज दैट यू हैव अ डिफरेंट पैशन। आपको डांसिंग में ज्यादा मजा आता है, आपको फूड ब्लॉगिंग में ज्यादा मजा आता है, आपको यूट्यूब चलाने में, यूट्यूब आपको सिंगिंग करने में, या कोई भी चीज, पेंटिंग, आर्टिस्ट, इन सारी चीजों में ज्यादा मजा आता है। एंड यू कैन pave your career way towards your passion, so you can explore other industries very well. So this is another very good backup option for all CA students available. तो मैं आज भी कहूंगी in this video again, मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, make sure that you do not leave out your passion in this course. Okay, although इस कोर्स में बहुत सारा एक्सटेंसिव पढ़ाई और बहुत मेहनत की जरूरत होती है, and in this journey we tend to leave out passion, talent, hobbies, कि इसे साइड रखो बाद में करेंगे, but don't do that. Try to manage your passion along with the professional journey that you are going right now. Okay, the reason being, the passion will always keep you stress free. See, that will always give you a sense of security. You are at least doing something very good. कि अगर तुम्हें कहीं और से कुछ negative thoughts भी आ रहे हैं, this will balance out those negative thoughts. Okay, so that is why I always continue my passion for dancing, classical dance, not the planned TikTok wala. I'm a proper trained Kathak dancer. So uh, I am continuing that passion along with the course, right? Yes. Again, a very good another option is pursuing a career in public sector. Okay. So public sectors में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत जरूरत। इनफैक्ट बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा, देयर आर सो मेनी अदर जो पब्लिक सेक्टर्स निकालती हैं which they require CA इंटरव्यू। मैंने देखा है डीएमआरसी की वैकेंसी, मैंने देखा है डीएमआरसी इज दिल्ली मेट्रो रेल कोऑपरेशन, दिल्ली मेट्रो के वैकेंसी, मैंने देखा है बहुत सारे बिग गवर्नमेंट, आरबीआई के सारे इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा है देयर इज सम स्पेसिफिक वैकेंसी दैट कम्स आउट just for CA intermediate qualified students, or just for CA students, or just for CA chartered accountant. Okay, so make sure if you just feel and you're not able to give your exams after giving multiple attempts, a bar take a break for 6 to 8 months. You can try out some government exams. ये भी बहुत आसान नहीं, but I am very sure with 6 to 8 months of preparation, government exams can be cracked. और ऐसा है कि आपने एक तैयारी कर ली और इससे आप मल्टीपल वैकेंसी को टारगेट कर सकते हैं। आपने एक बार गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर ली, यू कैन टारगेट मल्टीपल वैकेंसी। So you can even go into public sector, you can start working, or you can work for government agency or even organization. Okay, so this is another a very good backup option. Okay, so even if, अगर मैं बता रही हूँ, ये आज आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये लाइव सुन रहा है, इस चीज को ध्यान रख लेना। द मोमेंट यू फील इन योर लाइफ कि यार ये बहुत मुश्किल हो गया, और अब वो पॉइंट आ गया जहाँ मैं उस पॉइंट पे हूँ कि अगर ये छोड़ दिया तो मेरी होगी, रिमेम्बर देयर सो मेनी, आज मैंने बताया है आप कर सकते। द ओनली पॉइंट इज आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी को या तो पॉज करना होगा या फिर पॉज करके यू कैन स्विच इनटू ऑल दीस थिंग्स, देन यू कैन कम बैक टू। आपने भी देखा होगा, लिंक्डइन पे देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, गूगल कहीं पे भी देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा,
there's so many people who have actually qualified chartered accountancy exams at the age of 70, 60, 40, 80, पता नहीं, पर इतने एजेस तक निकाला है, राइट? तो आपको क्या लगता है वो अनसक्सेसफुल थे, वो बार बार बैक टू बैक अटेम्प्ट्स देते जा रहे थे एंड 80 इयर्स तक वो अटेम्प्ट्स देते रहे? नो, दे वुड हैव लेफ्ट द जर्नी, राइट? एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हमारा सीए कोर्स इज कि हम कभी भी लीव करके कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। देयर इज नो क्राइटेरिया कि लैप्स हो जाएगा प्रीवियस क्वालिफाइड डिग्री, राइट? हर एक पर्टिकुलर स्टेज एक तो पर्टिकुलर डिग्री है, एक तरीके से कह लो। आपने इंटरमीडिएट कर लिया तो कभी आपको दोबारा इंटरमीडिएट देने की ज़रूरत ही नहीं है। You can pause your career in for a while, take a break for 6 months, go and explore other options, public sector or your passion. साइड बाय साइड 2-2 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ो। Uh, Dear C. Okay, so currently I'm in that phase itself. So I've I've paused my CA journey. Rather, I've started exploring my passion into teaching. So इसीलिए मैंने अनअकैडमी पे as an educator joined. Explore my passion as an and also I'm trying my passion in dancing as well. So maybe I'll be continuing my CA course 2 months or a few months later on. बट हाँ, आई एम एक्सप्लोरिंग माई पैशन, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि मुझे आगे लाइफ में कहाँ जाना है। रिमेंबर, सीए इज जस्ट अ डिग्री एंड you should keep on growing while you are achieving that degree. एक्सप्लोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ताकि ये बनते ये दिमाग में ना आए कि अब आगे क्या। ये बनते तक आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। Okay? So that is another good option that you can figure out, which is a career in the public sector. Okay. So with this, we come to all the backup career that was available for CA. Let me just revise all the points in just 1 minute, and then we can. Okay. Number one backup career that you could have is just going for basic graduation and then MCom or MBA, BBA, MBA, any of these very traditional courses, ताकि आपके पास कभी भी ना हो कि कुछ नहीं किया। ठीक है, आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, बट क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, इसलिए वो बहुत सारे तो में क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, एंड इंटरमीडिएट को अभी भी इक्विवेलेंट नहीं माना गया है ग्रेजुएशन में। प्रोसेस इज ऑन गोइंग, वेयर एज सीए को पीजी डिग्री मानी गई है, इंटरमीडिएट को ग्रेजुएशन। प्रोसेस इज ऑन गोइंग, yes. So you can pursue higher education in higher examination, and then afterwards you have switched to another accounting career like financial analyst, business analyst. Okay. आप आपकी नॉलेज है उससे आप थोड़ा सा 1-3 महीने का कुछ कोर्स करके शॉर्ट टर्म कोर्स switch to another career in finance. You can start your own business as you feel like. If you have your parents' business, continue with all that, and you can explore other industries like education, healthcare, non-profits, where this is not mandatory that you should be a chartered accountant. For example, if you're good in law and you are extremely good in law, you can just switch uh, law educator, and maybe you can a foundation. Pursue a career in public sector. Again, I think okay. I thought there was some technical issue because my screen लगा कुछ प्रॉब्लम हो, बट नहीं, प्रॉब्लम नहीं। So yeah, with this I'm about to end this session. So if you liked it, do like let me know, and